Students, today I will be taking the first lesson of your geometry, that is similarity. The first topic of this lesson is ratio of areas of two triangles. Before starting this, we should see how to find the area of a triangle. एरिया का ये फॉर्मूला क्या है? अपन प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है. रेशियो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल is half into base into height. Area is equal to half into base into height. So normally, based on the angles, three types of triangles are there. तुम लोग सबको मालूम है. Which are the three types? One is acute angle triangle, second is right angle triangle, and third one is obtuse angle triangle. Triangle ABC. This is an acute angle triangle. So इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बट इसमें कौन सा बेस है? कोई बोलेगा BC इज द बेस, लेकिन सम ऑफ यू नो दैट एनी ऑफ द साइड वी कैन टेक एज द बेस. सपोज BC is the base, and which one is the height? Height and altitude same है, both are same. Altitude कैसे बनाएगा? कोई भी साइड से उसका ऑपोजिट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो दैट इज द ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड का दूसरा नाम है हाइट. सो BC बेस रहेगा तो ऑपोजिट वर्टेक्स इज ए, उधर से क्या रहेगा? BC में परपेंडिकुलरली ड्रॉ करने का. सो AD इज द हाइट. व्हेन BC इज द बेस, AD इज द करस्पॉन्डिंग हाइट. बट AB also we can take as the base. AB बेस रहेगा तो AD हाइट नहीं चलेगा. AB का करस्पॉन्डिंग हाइट होना चाहिए. वो कैसे बनाएगा? 8th स्टैंडर्ड में अपन पढ़ा है. AB से इसका ऑपोजिट वर्टेक्स CA, उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का. परपेंडिकुलर होता है AB से 90 डिग्री में लाइन C में ड्रॉ करने का. सो दिस इज E. व्हेन AB इज द बेस, its corresponding height is EC. EC is the corresponding height. AC भी बेस रख सकते हैं. AC बेस रहेगा तो हाइट कौन सा होएगा? AC से उसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? B. उसमें क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. सो AC से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का 90 डिग्री में होना चाहिए. परपेंडिकुलर बोले तो दैट इज 90 डिग्री. So this point is F. When AC is the base, BF is the height. So this formula we can write it as half into, when BC is the base, half into BC, and its corresponding height is AD. Suppose AB is the base, that is half into AB into its corresponding height is EC. Otherwise, if AC is the base, that is half into AC into its corresponding height is BF. So any of the three sides we can take as the base, but the corresponding height you have to take.
So all these values BC, AD, AB, EC all are different, but area is same. When you calculate, you will get the same area because this triangle is having only one area and this is the area. This portion is the area. कैसे भी कोई भी फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करो, एरिया का वैल्यू चेंज नहीं होएगा. सपोज यू कंसिडर ए राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो क्या रहेगा अपन देखेगा. Right angle triangle means one of the angle is 90 degree. ABC. Angle B is 90 degree. In this case, suppose BC is the base. BC का opposite vertex A. उसमें perpendicular क्या रहेगा? AB रहेगा perpendicular. So इसका value क्या रहेगा? Half into. This become BC into AB. नहीं तो AB को बेस रखो. AB का बेस रखेगा तो हाफ इंटू AB इंटू इसका हाइट क्या रहेगा करस्पॉन्डिंग AB का? AB से परपेंडिकुलर. इट इज ऑलरेडी देयर. AB से परपेंडिकुलर C में, दैट इज BC. So half in AB, half into AB into BC. One more side we can take as the base, that is AC. AC से opposite vertex B में perpendicular draw करना है. So AC से B में perpendicular draw करेगा तो so this is a perpendicular. AC बेस रहेगा तो BD इसका हाइट रहेगा. That is half into AC is the base and its corresponding height is BD. This is the case of a right angle triangle. Third type of triangle, that is obtuse angle triangle. So obtuse means क्या रहेगा? Above more than 90 degree. That means obtuse angle triangle means one angle is greater than 90 degree and the other two angles are acute angles. PQR is the obtuse angle triangle. This angle is obtuse. So इसमें क्या बेस रख सकते हैं? सपोज QR इज द बेस. QR बेस रहेगा तो इसका हाइट कैसे ड्रॉ करेगा? QR बेस रहेगा तो QR का ऑपोजिट वर्टेक्स P है. QR से परपेंडिकुलर P में नहीं आएगा. फिर क्या करना पड़ेगा? QR को P का साइड में एक्सटेंड करना पड़ेगा. QR को एक्सटेंड किया P का साइड में, फिर उधर से परपेंडिकुलर P को बनाने का. So that is PS. That means if QR is the base, PS is the height. This equation becomes half into QR into PS. QR base हो गया, PS is the height. So ये ड्रॉ करके SR is the base ऐसे मत देखो, वो तो रॉन्ग है. SR is not the part of this triangle. ये ट्रायंगल का साइड क्या है? QR. उसका परपेंडिकुलर हाइट क्या है? PS. So half into QR into PS. दूसरा कौन सा साइड अपने को रख सकते हैं? अभी PQ को रख सकते हैं. PQ क्या रहेगा? PQ is the base.
पी क्यू बेस रहेगा तो पी क्यू का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या रहेगा? आर। पी क्यू से कैसे भी परपेंडिकुलर आर में नहीं जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो इधर से जाएगा, इसका नीचे जाएगा नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पी क्यू को आर का साइड में एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर इसमें से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। सो पी क्यू बेस रहेगा तो टी आर इज द हाइट. This become half into PQ is the base into TR, that is the height. ये ट्रायंगल में और एक साइड है, वो कौन सा है? PR. PR का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? PR का ऑपोजिट वर्टेक्स Q है, वो तो डायरेक्टली मिलेगा। सो PR से ऑपोजिट वर्टेक्स में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, that is U. So PR is the base, QU is the height. Half into PR into QU. अभी तीनों ट्रायंगल का बेस कैसे कंसिडर करेगा, उसका करस्पॉन्डिंग हाइट कैसे आएगा, अभी तुम लोग को आइडिया आ गया। So now I am going to our topic, that is ratio of area of two triangles. First triangle is triangle ABC. The corresponding height of BC is AD. And another triangle, that is PQR. And the corresponding height of QR is PS. So what is the area of triangle ABC? Area of triangle ABC is equal to half into base, base is BC, into height, height is AD. So this is the ratio of the areas of two triangles. First one is triangle ABC. So ratio बना तो second triangle का area क्या किधर आएगा, उसका नीचे आएगा, area of triangle PQR, that is equal to, right side क्या आएगा, राइट साइड में भी रेशियो आएगा, हाफ इंटू इसका बेस क्या रहेगा, QR, उसका करस्पॉन्डिंग हाइट क्या रहेगा, PS आएगा। So these two half 1/2 1/2 both will be cancelled, and finally we will get BC into AD upon QR into PS. What is BC? BC is the base of first triangle, B1 into AD. AD is the height of first triangle upon QR. QR is the base of second triangle, that is B2, and PS is the height of second triangle, that is H2. So what is the ratio of area of two triangles? The ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding height. That is A1 upon A2 is equal to B1 into H1
upon B2 into H2. So this is the formula to find the ratio of areas of two triangles. इसमें भी क्या आते हैं, डिफरेंट टाइप्स आते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स मीन्स क्या रहेगा, फर्स्ट वन में क्या रहेगा, टू ट्रायंगल हाइट सेम है और इक्वल है. हाइट ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल. व्हाट हैपेंड टू दिस फॉर्मूला? दिस इज ट्रायंगल ABC and its height is H. दूसरा ट्रायंगल PQR, its height is also H. PS is the height. इसमें दोनों का हाइट इक्वल है. सो तभी क्या होएगा देखते हैं. सो व्हाट इज द रेशियो? Ratio of the areas of two triangle is equal to the ratio of the product of their bases and the corresponding height. So what happened here? First one, ABC, triangle ABC. BC is the base and its height is H. In second triangle, base is QR and its height is H. So H and H क्या होते हैं, कैंसल हो जाएगा. So finally क्या रहेगा, BC upon QR, that is base of the first triangle upon base of the second triangle. So ये height equal रहेगा तो ratio of the areas of two triangle is equal to the ratio of their corresponding bases. दोनों का height क्या हो गया, दोनों का height कैंसिल हो गया. This is condition number 1. कंडीशन नंबर 1 में क्या आ गया, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट. इसका कंडीशन नंबर 2 आते. कंडीशन नंबर 2 में ट्रायंगल whose base are same or triangle with a equal base. First triangle is triangle ABC and another triangle is triangle BCD. ट्रायंगल ABC का हाइट क्या रहेगा, BC से परपेंडिकुलर, that is AE, and second triangle BCD, इसका हाइट DF. सो इसमें एरिया कैसे आएगा देखेगा. फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle BCD. ABC का बेस BC, उसका हाइट क्या रहेगा AE. So that is BC into AE, product of base and corresponding height upon BCD का भी बेस, ABC का बेस BC था, BCD का बेस क्या है, BCD का बेस भी BC है. सो नीचे भी आएगा BC इंटू, बट BCD का हाइट क्या रहेगा, DF आएगा. देखो इसमें क्या क्या कैंसिल होएगा, BC एंड BC कैंसिल हो जाएगा. The final answer is AE upon DF.
So what is AE? AE is the height of the first triangle and DF is the height of the second triangle. That is A1 upon A2 is equal to H1 upon H2. So ratio of the areas of two triangles with equal base is the ratio of the corresponding heights. That is type 2.